उसके बाद हम कहते हैं दीज पार्टिकल्स, ऑक्सोसोम्स के बाद दीज पार्टिकल्स are involved these particles are involved in the synthesis of or involved in the synthesis of ATP। यही पार्टिकल्स P1 पार्टिकल या ऑक्सोसोम्स क्या बनाते हैं? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The space bound by inner membrane, the space bound by inner membrane, the space bound by inner membrane is called inner chamber, which is filled by a matrix, matrix is a proteinaceous gel-like substance which contains a few smaller size ribosomes, circular DNA molecule and phosphate granules mitochondria are absent in bacteria and red blood cells of mammals, chemically the mitochondria are composed of
Chemically, the mitochondria are composed of 60 to 70% proteins, 60 to 70% proteins, and 25 to 30% lipids. Lipids. The mitochondria also contains the mitochondria also contains traces of sulfur, iron, calcium, copper, magnesium, and some vitamins. The DNA content is about 1%. The DNA content is about 1%. Functions of mitochondria. Functions of mitochondria. Site of aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. दूसरा फंक्शन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज make their own proteins from ribosomes. Synthesis of fatty acids. Fourth one, synthesis of fatty acids. It synthesizes energy. Rich compound ATP. तो हम कहते हैं बेटा, कल हमने पढ़ा था ऑक्सीजोम्स तक या P1 पार्टिकल्स तक. तो हम कहते हैं ये जो पार्टिकल्स होते हैं यही इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी. और बेटा ये जो स्पेस होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम कहते हैं इनर चैम्बर, जिसमें बेटा क्या होता है मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोटीन या जेल लाइक सब्सटेंस, जिसमें बेटा स्मॉल साइज राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं.
माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर और रेड ब्लड सेल्स के ऑफ मैमल्स, हमारी आरबीसीज में। केमिकली हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, 60 to 70% प्रोटीन, 20 to 30% लिपिड्स, और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे सल्फर, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड विटामिन। इसके अंदर डीएनए कंटेंट कितना होता है, 1%। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, हम कहते हैं साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। हम कहते हैं ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है बेटा। इसका मतलब है ये अपने प्रोटीन्स खुद बनाती है, कहाँ से, राइबोसोम से, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, और ये सिंथेसाइज करती है फैटी एसिड्स को। इट सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, और ये बेटा